यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को अहम इलाकाई क़ुव्वत करार देते हुए अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खिलाफ उसका हक़ दिफा तस्लीम कर लिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा ने कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान को अपने दिफा का मुकम्मल हक़ हासिल है। अफगान मसले के बायस खत्ते में अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ने का खदशा है। उन्होंने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ भी की। Here in the region, Pakistan has been locked in a conflict with Afghanistan. The fighting in recent weeks have had grave humanitarian consequences and also risks fueling further instability and radicalization. And this is why we have constantly called on both sides to exercise restraint and de-escalation. Pakistan has the right to defend itself and its people in line with the international law. Pakistan has been the main mediator between the United States and Iran. Your diplomatic efforts have helped to prevent a return to full-blown war on several occasions. With your support, there is now a tenuous diplomatic opening to extend the ceasefire and reopen the Strait of Hormuz. Yet any temporary understanding between US and Iran must be followed by deeper talks